हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द वोकैब शो। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार। आज हम लोग फिर से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं टू डिस्कस अबाउट द vocabulary words which are going to be very helpful for you people when you'll be appearing in your exam. And the vocabulary जैसे मैं आपको बताती आई हूँ, it is going to build up a base of your English language, because किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख ले तो उसको आप लोग अच्छे से तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों के पास अच्छा वोकैबुलरी होगा। अच्छे वोकैबुलरी के पैकेज के साथ जब आप लोग जाते हो अपना एग्जाम में अपेयर होने, देन किसी भी तरह की क्वेश्चन को हम लोग टेकल अप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट सिनोनिम्स, एटोनिम्स एंड द न्यू वर्ड्स। तो वहाँ पे जो सिनोनिम एटोनिम है वो इन वन वे और अनदर वो कहीं ना कहीं पे जाके हमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में बहुत अक्सर दिख जाते हैं। सो आई वॉन्ट यू पीपल की चाहे वो सिनोनिम इजी है चाहे डिफिकल्ट वाला हम लोग आपके लिए पिकअप करके ला रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम, राइट? So many of the participants are there with us today. Welcome you all guys. Welcome. Very good evening to all of you. So let's take up the article. The name of the article is basically, it is about winter cheer on political round the 2018 Winter Olympics, right? So let's take up the first news line which is there on your screens. It is, the Russian doping scandal continues to cast a long shadow over international sport as 2018 Winter Olympics begin in Pyongyang, South Korea on February 9th. And so this is the news line, and from here we have taken a word for you people, and the word is doping. So you people are going to be going to tell me about the synonym, atonym and the meaning of this word, right? जो participants हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, I welcome you people. Welcome you people on the show. So let's check out the meaning of this word doping. This is basically a noun in nature, and its meaning is any narcotic or narcotic like drug taken to include euphoria or सेटिस्फाई एडिक्शन। तो जहाँ पे लोग कुछ नारकोटिक्स की बात करें तो वो कुछ नारकोटिक्स कंज्यूम करते हैं ताकि जो उनका अर्ज होता है, ताकि उनका जो एडिक्शन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, when they use any type of the narcotics in their meal or when they used to make the intake of any type of narcotic, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, that is doping. शंकर जी बता रहे हैं it is about adulterate, so perfectly it can be adulterate as well बिकॉज जहाँ पे चीज़ों की इनप्योरिटी की बात होती है, जहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा उसमें एडअप करके कुछ उसका डिफरेंट चीज़ वहाँ से जनरेट करते हैं, कुछ डिफरेंट खाने की बात करें तो वहाँ पे जब एक डिफरेंट फ्लेवर रेडी अप होता है बाय एडिंग द इंग्रेडिएंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स which are usually not there. So over there also we can perfectly use this word, that is doping. Let's check out its meaning in Hindi. Its meaning is it's about नशा। तो of course हम लोग narcotics की बात कर रहे हैं तो of course वहाँ पे नशे जैसा situation रहता है because of its contents, right? Okay, Sujit, I want to request you to please refresh your screen in order to get the video and the content. Okay, let's take up the synonyms which are there on the screen. It is about anesthesia, narcotize, inject, adulterate, sophisticate. तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों को एनेस्थीसिया की बात करें तो ऑपरेट करने के पहले डॉक्टर्स जो हैं बहुत बार एनेस्थीसिया देते हैं अपने पेशेंट्स को, so that they should not feel any type of pain during the surgery. So we have narcotics as well, जहाँ पे जिसके consumption से many of the people used to satisfy their urge of drugs or something like that, right? जब हम लोग इसके एटोनिम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें रहेंगी, that is, जो वर्ड्स एसोसिएट होंगे वो रहेंगे, इट इज़ अबाउट क्लीन, इट इज़ अबाउट प्योरीफाई. सो द वर्ड्स विच जहाँ पे कुछ अडल्ट्रेशन नहीं है, जहाँ पे कुछ मिक्सिंग अप ऑफ द डिफरेंट कंटेंट्स नहीं है, क्लीन चीज़ें हैं, प्योर हैं, ओरिजिनल हैं, तो वो जो सारे वर्ड्स यूज होंगे वो एटोनिम्स का ग्रुप फॉर्म अप करेंगे अगेंस्ट दिस वर्ड, दैट इज डॉपिंग. So let's take out the example which is there on your screens. It is about
Harun keeps on getting merged into his dropping of cigar. So यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस इंसान की जो सिगार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है, डॉपिंग सिचुएशन आ चुका है. So there we have used this word. I request you people to please make the usage of this word in a sentence and kindly put it in the comment section. The horse was dropped before the race. She dropped the surface with the photographic emulsion. That's perfect, dear. सुजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी ये सिनोनिम्स हैं इन सभी का सिमिलर मीनिंग है. दिस इज द रीजन व्हाई दे आर इन द कैटेगरी ऑफ सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स का मतलब खुद में वही होता है जिस चीज जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग निकलता है, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग एक कैटेगरी के अंडर, एक ग्रुप के अंडर उसको डाल सकते हैं. द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन दैट दिस इज द ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स. सो सिनोनिम्स का मतलब भी वही है जो हम लोग वर्ड टेकअप कर रहे हैं. दैट इज anything that is related to drugs or narcotics or कुछ चीज जब consume होती है in order to satisfy the addiction, right? Okay, so let's check out the new word with the next news line. Can we have the next slide? Okay, the next slide is there in front of us. It is the announcement did not go down well outside Russia, even though the IOC declared that more than 80% of those athletes had not competed in Sochi and had been carefully vetted. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym of this word vet. Its pronunciation is very much similar to the word wet, that is with the W-E-T. So can we have the meaning of this word with the next slide? Okay, this word weight is basically a noun in nature and its meaning is to assess for specific qualities before making a final decision. तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत एक फाइनल डिसीजन पे जाने से पहले हम लोग उन चीज़ों के बारे में इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज को जब हम लोग गो थ्रू करते हैं, देन हम लोग परफेक्टली इस वर्ड का यूसेज कर सकते हैं. At that situation we can perfectly use this word. शंकर जी हमें बता रहे इट इज अबाउट असेस. दैट्स परफेक्ट. जो वैल्यू इट इज आल्सो करेक्ट. जो हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, मोहब्बत इज देयर, सो वेलकम यू ऑल. Let's check out the synonyms which are there on the screen. It is about ponder, inspect, appraise, scrutinize, dwell into. तो जहाँ पे चीजों dwell into, तो जहाँ पे चीजों को हम लोग बहुत ही उसकी डेप्थ में जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको कुछ भी फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले हम लोग बहुत सारे फिल्टर्स लगा के उसका चेकअप करते हैं वेदर इट इज गुड फॉर यू पीपल और नॉट. सो वहाँ पे उन सिचुएशन में परफेक्टली हम इस वर्ड का यूसेज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द अटोनिम्स. अटोनिम्स की बात करें तो जहाँ पे एक अप्रूव रहता है, इग्नोर, निग्लेक्ट, ओवरलुक, तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों को ऊपर से निकाल देते हैं, जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर नहीं इतना फोकस करते. कुछ भी सिनेरियो है हम लोग जस्ट वेगली उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, जहाँ पे चीज़ें हमें ज़्यादा लॉस नहीं करने देने वाली हैं. तो वो जो सारे वर्ड एसोसिएट होते हैं वो अटोनिम्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर दिस वर्ड दैट इज वेट. ओके, let's take up the example which is there on the screen. It is about publishers hire several experts to vet the historical manuscripts for accuracy. तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इंस्पेक्ट करा, उनको गो थ्रू करा, उनका अप्रेज करा इन ऑर्डर टू बिकॉज व्हाट वाज देयर पर्पस इज कि उनको हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए एक्यूरेसी का उनका ज़्यादा पीक इम्पोर्टेंस था उनका. सो देयरफॉर they were inspecting a lot of experts by the publishers are doing so. So this is the explanation of this example. Let's check out the examples which are there on my comment screen from your peer mates. Each applicant will be vetted by police. That's perfect. तो of course जहाँ पे हम लोग जहाँ पे weapons allowed नहीं होते, prohibited होती है, कोई भी चीज़ prohibited होती है, तो वहाँ पे जब एक inspection होता है तो वो बहुत careful inspection होता है before making a final decision that whether we are allowed to enter that premises or not, right? Okay, so let's take up the next news line with the next word. Okay, so the next news line is telling us something about that the OAR
will form one of the largest contingent at games, although there will be no place for the Russian flag and anthem, makes a ban seems to be a bit farce, right? So the word that let's take up the first word. Let's take up the first word, that is contingent. So you people are required to go through its pronunciation as well. Try to speak out this word more. Try to speak out this word twice or thrice so that you people can learn its pronunciation as well. So please give me the meaning, synonym and antonym for this word contingent. Time requires over 3 days this week to explain how such a hostage taker with a family connection to extremists could have passed US vetting procedures. That's perfect, dear. Java program ji, that's perfect. Mohammed ji bata rahe hame police vet the various criminals who are accused in criminal cases. That's again perfect. Hi Kamila ji, welcome to the show. So let's check out the meaning of this word contingent. Contingent, this is basically an adjective in nature, and its meaning is depending on whether or not something else occur. तो जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्ट नहीं करी जाती हैं, जो चीज़ों का अक्रेंस जो है वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, तो उन सिचुएशन में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. इस वर्ड को हम लोग परफेक्टली यूज कर सकते हैं. सिनोनिम्स को देखते हैं. इट इज अबाउट एक्सीडेंटल, तो जहाँ पे चीजें प्लान्ड नहीं होती हैं, प्री डिफाइंड नहीं होती हैं, एक्सीडेंटल हो जाती हैं. लाइक अपने हम लोग कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से या कुछ भी ऐसा होता है, चीजें जब हमने खुद प्लान नहीं करा होता है कहीं से हो जाती है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. अनफोर्सीन, अगेन जिसके बारे में सोचा देखा ना हो. अनएक्सपेक्टेड एंड हैपहैज़र्ड, राइट. So let's talk about the antonyms. The antonyms इसके थोड़े positive direction में जाएंगे. It is about essential, defined, sure, certain, truthful and unconditional. तो जहाँ पे चीज़ों का certain होता है कि वो exist करेंगी, उसका take place होगा. जहाँ पे चीज़ें definite होती हैं, sure होती हैं, तो वो सारे words जो हैं वो antonyms का group form करते हैं for this word contingent. It is about chance, accidental, fortuitous, it is unforeseen. That's perfect, Shankar. Let's take up the example which is there on the screen. The job offer was contingent upon the return of a clean background review. तो जहाँ पे उनको एक contingent उनको एक offer मिला है कि वो अपनी job को clean up background के साथ review कर सकते हैं, again start up कर सकते हैं, तो वहाँ पे perfectly इन्होंने इस word का usage करा है, that is contingent. The contingent nature of job, that's perfect. So let's take up the next word from the previous news line only. Can we have the next line? Okay, the next word which is there on the screen, it is about farce. So you people are required to give me synonym, antonym and the meaning of this word farce. जो हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, और वेलकम यू ऑल, एंड ट्राई करा कीजिएगा इसके आप लोग स्टार्टिंग से ही जुड़ सके, बिकॉज हम लोगों का कोशिश होता है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 वर्ड्स आपके लिए एवरीडे लेकर आए, मिनिमम 10 वर्ड्स. सो आई वांट यू पीपल कि आपका कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए. यू पीपल शुड बी ऑन टाइम टू गो थ्रू ऑल द वर्ड्स, राइट. सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. It is contingent that it has been raining since morning. That's perfect, Kamila. His fees were contingent on success of his research. It should be research. That's perfect, dear. This word farce is basically a noun in nature and its meaning is a ridiculous situation or event. तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बहुत uncomfortable situation का, ridiculous situation का, जहाँ पे बहुत बार फनी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं, फनी इवेंट्स भी टेकअप करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एट द प्लेस ऑफ वर्ड रिडिकुलस हम लोग परफेक्टली इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, दैट इज farce. Let's check out the synonyms of this word. It is about absurdity, comedy, mockery. It is about burlesque. So जहाँ पे अगेन हम लोग चीज़ों को रिडिकुलस सिचुएशन में लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते उसको, नॉर्मली हम लोग उसके ऊपर सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, तो वो जो वर्ड्स एसोसिएट होते हैं, दे आर गोइंग टू बिकम द सब्स्टिट्यूट्स फॉर दिस वर्ड, दैट इज farce. Let's take up the antonyms for this word. It is about seriousness, sobriety. It is about
ट्रेजेडी, सोमिलिटी। तो यहाँ पे जहाँ जैसे सॉबरिटी की बात होती है, चीज़ें जेन्युइन वे में आ रही हैं, सिचुएशन बहुत क्लियर होता है, सॉबर वे में जा रहा होता है। वे हम लोग इसका एग्जांपल कोट कर सकते हैं यहाँ पे कि एक सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जहाँ पे वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन अस, एंड एक सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत सोबैरिटी, एक सीरियस सिचुएशन रहता है. So this is the way how we can distinguish in both the situations which one is ridiculous and which one is the serious one, right? So let's take up the example. It is about the movie was complete farce, showing how ridiculous the actor viewed politics. तो कितना उसने ridiculous situation देखा था politics में. The movie was based on those facts and figures, right? So let's take up the examples which are there on my screen from your peer mates. It is about why did he continue the farce when he must realize she had him pegged. Okay. He torched the backwoods in second-rate farce. That's perfect. Disapproving is also perfect today. Let's take up the next word with the next news line. The choreographed confusion of real phrase is also perfect here. Okay, so can we have the next news line? Okay, it is last week there was more outrage after the court of arbitration for sport overturned lifetime bans on 28 Russian athletes sanctioned by IOC following the investigation into Sochi 2014, right? So this is the news line. From here we have taken a vocabulary word for you people. It is outrage. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym of this word outrage, right? The farce attitude of teacher irritated me a lot today. That's perfect, Tajamul. Let's take up the meaning of this word with the next slide. Outrage word is basically a noun in nature and its meaning is very mad with fury. तो जहाँ पे गुस्से में आके लोग बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको situations को बहुत ज़्यादा serious बना देते हैं because of their madness only, because of their anger. So वहाँ पे हम लोग इस word को perfectly use कर सकते हैं, that is outrage. इसको synonyms के बारे में इसकी बात करें तो it is about barbarism, violence, shock, evil doing, mischief and ravishing, right? तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों को बहुत mischievous way में लेते हैं, हम लोग उसको normal situation में नहीं जाने देते हैं. Sometimes in the difficult situation the things or tables used to get turned to the violence as well. तो वहाँ पे perfectly हम इसका usage करते हैं. इन words को synonym बनाया जाता है for the word that is outrage. Let's take up the antonyms of this word. It is about advantage, it is about compliment, delight, obedience and honor. तो जहाँ पे हम लोग किसी को advantage करते हैं, किसी को compliment करते हैं, उसको honor करते हैं, उनको बहुत smooth going situation में उनको accept करा जाता है, तो वो जो सारे words हैं वो antonyms का group form करते हैं for this word that is outrage. Her voice trembled with outrage. That's perfect, dear. गुस्से के साथ उनके voice में भी changes आ गए. That's perfect. Let's take up the example which is there on the screen. It is about as the teenager driver cut me off on the interstate, I screamed at him due to my outrage of an accident. तो जहाँ पे एक टीनेजर ड्राइवर ने उनको बहुत इंटरस्टेट में जाके उनको बहुत डिफरेंटली उनको कट करा, उनको टेक ऑफ करा, तो वहाँ पे ही जस्ट स्क्रीम्ड एट हिम. उन्होंने बहुत गुस्से के साथ उस पर्सन के ऊपर वो चिल्लाते हैं बिकॉज ऑफ द मैडनेस ऑफ एन इंसिडेंट. बिकॉज कई बार होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है गाड़ियों का डैमेज के बारे में बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में परफेक्टली जब हम लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, परफेक्टली इस वर्ड का यूसेज कर सकते हैं, दैट इज outrage. There was widespread public outrage at the proposal. Okay, that's perfect, dear. So let's take up the next news line with the next slide. Kashmiri people showed much of outrage against paramilitary forces after two youth were killed in firing yesterday. Tajamal, that's perfect.
बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है अपने. दिस इज अ वेरी सैड हैपनिंग. जो दो हमारे सोल्जर्स जो हैं, ग्रेट सोल्जर्स जो हैं, उनके ऊपर फायरिंग करा गया है. दिस इज अ सैड न्यूज़, बट यू हैव मेड अ good usage of this vocabulary word. So let's take up the next news line. It is the little known host city, which sits some 80 kilometers from the border with North Korea, will bear witness to on-field displays of bonhomie between the neighbors, right? So you people can check out the pronunciation of this word as well at the bottom of the screen. Over here, H used to give a little sound. It is not like bonhomia. It is not like that. H don't give a much sound in this thing. It is just bonhomie, right? It is giving just a little sound. It is bonhomie, right? So please give me the meaning, synonym and antonym for this word, that is bonhomie. Shankar ji bata rahe hain, it is about geniality, it is about conviviality. Okay. So this word bonhomie, it is basically a noun in nature and its meaning is friendliness, pleasant, good natured manner. तो जहाँ पे बहुत friendliness जैसा situation रहता है, खुश मिजाजी सा environment रहता है, माहौल ऐसा कुछ रहता है, तो वहाँ पे perfectly हम लोग इस word को use कर सकते हैं. That is bonhomie. Then we have synonyms. Synonyms में बात करें तो it is about amenity, agreeability, pleasantness. It is collidely and amiableness. तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों को admire करते हैं, कुछ लोगों की बात करें तो वो बहुत अच्छे नेचर के साथ gladness में रहते हैं, happiness impart करते हैं दूसरों को, तो उन words को हम लोग associate कर सकते हैं as the synonym for this word, that is bonhomie. Then we have the antonyms. तो antonyms में बात होगा loftiness का, coolness, coldness. तो जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, जहाँ पे coldness बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो जो words associate होंगे वो antonyms का Q form करेंगे against this word, that is bonhomie. उदय जी बता रहे हैं it is about cheerful, it is about friendliness, that's perfect. He excluded good humor and bonhomie, that's perfect. So let's take up the example which is there on your screens. It is about as role models, the teachers decide to foster bonhomie among the students. So of course जो friendly nature था, teachers का responsibility बनता है. बच्चों को friendly nature सिखाने से पहले teachers should have a friendly relationship with everyone, with every other teacher in the school or college, wherever they are. So वहाँ पे उन्होंने perfectly इस word का usage करा है, that is bonhomie. Let's take up the examples which are given by your peer mates. Jyoti ji बता रही हैं, lots of people follow Kapil Sharma just because of his bonhomie nature. That's perfect. Shankar is telling us he radiated an aura of benevolence and bonhomie. That's perfect. There seems to be some bonhomie between North and the South Korea after Jin Yong's sister visited South Korea yesterday. Perfect. So let's take up the next news line for the next word. Okay. The next news line is this was probably best exemplified by the several reversal instance of the six-member panel Hatruto, most dovish member Rabindra H. Dholakia to vote to stand pat on interest rates, right? So the word that we have taken from this news line is dovish. So you people are required to give me the meaning, synonym and antonym of this word, that is dovish, right? There was a lot of cheerful bonhomie among people on the trip. Among people on the trip, it should not be among guests. So let's take up the meaning of this word dovish with the next slide. This word dovish is basically a noun in nature and its meaning is inclined to live in peace or to avoid war. तो जहाँ पे हम लोग peace को ज़्यादा importance देते हैं, जहाँ पे हम लोग peace में रहना चाहते हैं, जहाँ पे जिस situation में हम लोग wars को avoid करते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ war जैसा situation create हो, when every time we give preference to living in peace, तो उन situations में हम लोग इस word को use करते हैं. Synonyms को देखते हैं. It is about
पैसिफिक, पीसफुल, पीसफुल, काम, साइलेंट, तो वहां पे हम लोग जो स्मूथ गोइंग चीजें होती हैं उनको उनको सिनोनिम्स बनाते हैं फॉर दिस वर्ड दैट इज डॉविश। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अटोनिम्स की तो वहां पे रहेगा ब्लड थर्स्टी, हॉकिश, मार्शल, वॉर लाइक, तो जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी रहती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होने के कारण, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने के कारण बहुत कुछ होता है, ब्लड थर्स्टी वाला सिचुएशन भी रहता है, तो उसके उन वहां पे जो वर्ड एसोसिएट होंगे वो एटोनिम्स बनेंगे फॉर द वर्ड दैट इज डॉविश। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। इट इज द ग्रेट सेंट ऑलवेज टीच डॉविश स्ट्रैटेजीज ऑफ लाइफ। तो जो बहुत महान संत होते हैं जो या फिर महान लोग होते हैं वो यूजुअली बात करते हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज हमें देते हैं, जिन स्ट्रैटेजीज हमें देते हैं लाइफ की जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने से लाइफ बहुत स्मूथ गोइंग हो जाता है। जावा जी मैं आपको बताना चाहूंगी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट इज हैथ्रीटो। इट इज इसका मतलब है अब तक, राइट? जो भी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन का बात हो रहा है उसको अब तक उसका क्या स्टेटस था, तो इस वर्ड के मीनिंग को आप लोग ले सकते हैं एज अब तक, राइट? Okay, Mahatma Gandhi was one of the minister who was dovish in nature. That's perfect, Jyoti. Us should show dovish nature towards Palestine to avoid bloodshed in the Middle East. Mother Teresa spread the dovishness among the people. That's perfect, Kamila. So let's take up the next word from the previous news line. Can we have the next word? Can we have the next slide? Okay, the next word from the previous news line is pat. So you people are required to give me the meaning of this word that is pat. Uday ji bata rahe hain he is a dovish politician who was one of the signer of Model Peace Treaty. Okay, that's perfect. So let's take up the meaning of this word with the next slide. Okay, the pat word, meaning of this word pat is there on your screens. Shankar ji मैं आपको बताना चाहूंगी, Shankar is having some doubt with the example of the previous word that was dovish. So dovish is the thing जहाँ पे हम लोग peaceful चीजें हैं, peaceful strategies की बात करते हैं जो हमें लाइफ को गुजारने के लिए हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे हमने जो बहुत महंत होते हैं, संत होते हैं, तो वहाँ पे वो जो भी स्ट्रैटेजीज हमें देते हैं लाइफ को लीड करने के लिए, वो जो सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बहुत ही पीसफुल होती हैं, शांतिपूर्वक होती हैं, जो पीस स्प्रेड करती हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज वो यूजुअली पढ़ाते हैं लोगों को कि उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? सो लेट्स टेक अप दिस वर्ड दैट इज पैट. And this word is basically a verb in nature and its meaning is sticking to an opinion, course of action in spite of it should be in spite of reason and persuasion. तो जहाँ पे हम लोग किसी एक ओपिनियन के ऊपर खड़े रहते हैं, हम लोग उस ओपिनियन के ऊपर स्टिल रहते हैं, वी on the comments of anybody we don't even step back from our opinion. हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो ओपिनियन है, हम लोग उसी के ऊपर बात करते हैं, उसे हम लोग at any cost we don't want to change our opinion. तो वहां पे perfectly इस word का यूसेज होता है that is pat. इसके synonyms की बात करें तो it is about inconvenienciable, it is inflexible, bull-headed, hard-headed. तो जहाँ पे उसको फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो जहाँ पे हम लोग उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पे वो जो सारे वर्ड्स हैं एसोसिएट होते हैं विद दिस वर्ड दैट इज पैट. अटोनिम्स की बात करें तो जहाँ पे कंप्लेनिंग सिचुएशन होता है, जहाँ पे कंप्लाइंग, देन वी हैव इज रिलेंटिंग सिचुएशंस जहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे हम लोग इजीली किसी को कन्विंस कर सकते हैं. बाय कंपाइलिंग वी कैन चेंज द डिसीजन ऑफ एनी पर्सन. तो वहाँ पे इन वर्ड्स का हम लोग यूसेज करते हैं एज द अटोनिम्स फॉर दिस वर्ड दैट इज पैट. He patted him consolingly on the shoulder. Okay, that's perfect. Meaningful aim is pat to achieve wonderful success in future. I was just about to pat myself on the back for
whistling out of the location carbon test. He patted the bench beside him and I sat down. डियर मैं आपको बताना चाहूंगी जब हम इस वर्ड पैट को एज अ नाउन लेते हैं तब इसका मतलब होता है किसी का पीठ थपथपाना, किसी को जैसे जब आप लोग अच्छा करके आते हैं, कुछ एग्जाम में अच्छे स्कोर्स आते हैं, देन आपके पेरेंट्स जरूर आपकी पीठ थपथपाते होंगे, तो उस सिचुएशन को भी उस लाइक डूइंग सम हैंड मूवमेंट एट योर बैक, तो वहां पे भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज पैट, राइट? Okay, I think you people are making the sentences, तो आप लोग वो वाला पैट लेकर इसका यूसेज कर रहे हो, लेकिन जब हम लोग इसका न्यूज लाइन चेक करेंगे तो इट इज अबाउट पैट, जो कि बात होता है कि एक स्ट्रिक्ट ओपिनियन के ऊपर स्टिल रहना, उसके ऊपर अपने डिसीजन को नहीं चेंज करना, राइट? अब देखो जैसे शंकर जी बता रहे हैं, she patted down the earth in each pot, right? उन्होंने कुछ pot में कुछ sometimes होता है कि हम लोग जब उसमें मट्टी डालते रहते हैं, मट्टी डालने के बाद we used to pat it, तो जब हम लोग उसको pat करते हैं तब भी आता है कि उसको थपथपाने की जैसे बात होती है, but it is when this word is used as a noun, right? So let's take up the example which is there. He fearlessly pat the whole happening to her parents. तो जो भी उसका प्रॉब्लम था, जो भी उनका इश्यू था, उसने फियरलेसली अपने पेरेंट्स को अपने डिसीजन के ऊपर स्टिल रहकर अपने डिसीजन के ऊपर स्ट्रिक्ट वे से उसको टैकल अप करते हुए उसने होल स्टोरी, होल हैपनिंग जो था अपने पेरेंट्स को निर्डरता के साथ उसने बताया, राइट? सो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट न्यूज लाइन फॉर द नेक्स्ट मीनिंग. Okay. The next news line is the RBI nominee Michael D. Brata Patra, in fact, voted to head off insufficient price pressures by raising the policy rate by 25 basis points, right? So the word that we have taken from this news line, it is about incipient. So you people are required to give me the synonym, antonym and the meaning of this word incipient from the in the comment section. You people are going to put down meanings, right? Okay, so can we have the meaning of this word? Okay, this word incipient is basically an adjective in nature and its meaning is just the beginning to appear or develop. तो जिस चीज का बिल्कुल शुरुआत की बात करते हैं हम लोग, जो चीज डेवलप होना स्टार्ट होता है या फिर उसका बिगिनिंग स्टार्ट होता है, इमर्जेंट बता रहे हैं, दैट्स परफेक्ट, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट इज इंसिपिटेंट. जब बात होती है इनके सिनोनिम्स की, इट इज अबाउट इंट्रोडक्टरी, ओरिजिनेटिंग, इनिशिएटरी, कमेंसिंग, देन वी हैव नेसेंट, तो जहां पे चीजों का बिल्कुल इंट्रोडक्शन में रहता है, बिगिनिंग होता है, ड्रॉइंग की बात करते हैं, दैट्स आल्सो परफेक्ट, ग्रोइंग, गुड सिनोनिम्स यू आर गिविंग शंकर. सो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स का क्यू फॉर्म करते हैं फॉर दिस वर्ड इंसिपिएंट. अटोनिम्स में बात करें तो जहां पे चीजें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं, मिच्योर होती हैं, ग्रोन अप होती हैं, तो वो सारे जो वर्ड्स एसोसिएट होंगे वो टॉनिम्स का ग्रुप फॉर्म पर करेंगे फॉर दिस वर्ड, दैट इज एंसिपिएंट. देन वी हैव द एग्जाम्पल देखते हैं. It is the best way to stop the disease from spreading is by identifying it while it is incipient, right? So यहाँ पे जब चीजों का या डिजीज का जस्ट इंसिपिएंट होता है, जब चीजों का बिल्कुल शुरुआत होता है, तो जब हम लोग तभी अगर उसका डायग्नोज कर लें, तभी हम लोग अगर उसका आइडेंटिफाई कर लें, तो हम लोग बहुत सारी डिजीजों को रोकने से फैलने से रोक सकते हैं, राइट? Okay, so can we have the next word with the next news line? He could feel incipient anger building up. Okay, that's perfect. So the next news line is there for us on the screen. It is the normalization of monetary policy by advanced economies could spell a decisive and end to global easy money conditions and many trigger some flight of capital from emerging markets including India, right? So this is the news line. So I request you people to please give me the meaning of this word, that is decisive. So I am looking forward towards you people to give me the meaning, synonym and antonym for this word, right?
जावा जी हमें बता रहे हैं सेंटेंस फॉर द वर्ड incipient, that is real incomes should pick up, maintaining the incipient recovery in consumer spending. That's great. We seemed more friends than incipient lovers. Incipient lecturer afterwards kept monument. Okay, so let's take up the meaning of this word, that is decisive. Okay, this word decisive is basically an adjective in nature and its meaning is resolving a problem. तो जहाँ पे हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इट इज नॉट डिसाइडिंग, इट इज डिसीसिव. किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, उसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लेना, उसको सॉल्यूशन उसका देना, उसको एंड अप करना, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. इसके सिनोनिम्स को चेकआउट करें तो इट इज अबाउट क्रूशियल, कंक्लूसिव, इन्फ्लुएंशियल एंड रिजोल्यूट, राइट. तो जहाँ पे हम लोग चीज़ों को एक एंड अप की तरफ लेके जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम अराइज अप होता है तो उसको जब हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत क्रूशियल रहता है, इन्फ्लुएंशियल रहता है, तो वहां पे हम लोग इन वर्ड्स का यूसेज करते हैं एज द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड, दैट इज डिसिसिव, कंक्लूसिव, डिटरमाइनिंग, डिटरमिन, आशीष जी परफेक्ट. ऐसे ही वर्ड्स को लेकर हम लोग इसके सिनोनिम्स फॉर्म करते हैं. बात करते हैं टॉनिम्स की. इट इज अबाउट इनसिग्निफिकेंट, इनकंक्लूसिव, इनइफेक्टिव, इनडेफिनेट, तो जहाँ पे चीजों का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इंक्लूसिव की तरफ नहीं जाती हैं, जहाँ पे हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो जो सारे वर्ड्स यूज अप होते हैं वो टॉनिम्स का ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर दिस वर्ड, दैट इज डिसीसिव. Let's take up the example which is there on the screen. It is about the decisive factor in staying married to Tom. The woman told her best friend was based on our children. तो जो उनका एक डिसीजिव उनका फैक्टर था कि उनको टॉम के साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में रहना है. Why it was? Because of it was on the basis of their children. Because of the children only, सिर्फ बच्चों के कारण उनका ये डिसीजिव था कि उनको टॉम के साथ इकट्ठे रहना है इन द रिलेशनशिप. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, इसलिए उन्होंने ये डिसीजिव लिया है. प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा है उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ टुगेदरनेस विद द चिल्ड्रन, राइट. Last delivery proved to be decisive in winning the match against South Africa. That's perfect. The Archers played a decisive part in the victory. That's perfect. She had an image of being tough and decisive. That's again perfect, Shankar. So this was the last word from today's Vocab show. I hope you people are learning well from this show. We will keep on coming up with the new words, with the new things, with the new vocabulary words, so that you people can crack up your exam in a shorter time, as it is going to help you a lot in your every type of the question that you used to get in your competitive exams. So let's wind up the show with this last word. Thank you, goodbye, and take care.